तो लास्ट टाइम क्या किया था बेटा हमने? सैचुरेशन हो गया था? यस सर। एक्टिव भी हो गया था मेरे ख्याल से शायद। ये तो दो मोड हैं डिजिटल के। ये मोड है एनालॉग का। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स में। ये पार्ट बी में है चैप्टर आपका। इसके बाद आपका टॉपिक आता है, आपका ये हो गया बाइसिंग होगी, क्यू पॉइंट हो गया, मोड्स हो गए। आज हम करेंगे इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर based on the point of reference। तीन तरह के हैं प्राइमरीली, उसके बाद फिर सेकेंडरी इश्यूज हैं। पहला है कॉमन एमिटर, दूसरा है कॉमन बेस, तीसरा है कॉमन कलेक्टर। तो ये तीन जो हैं ये हैं प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशंस। इसके बाद आती है सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर, देन कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर, देन कॉमन बेस, कॉमन ये आती हैं कॉन्फ़िगरेशंस। ये इतने ही कर लो। पहले हम ये तीन प्राइमरी करेंगे, कॉमन मीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, और फिर उसके बाद उनके आगे फर्दर जो हैं सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशंस जिसे कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला है पॉइंट ऑफ रेफरेंस से करना क्लासीफाई हमने। तो कॉमन एमिटर जो है ये हम आज देखते हैं थोड़ा सा। दिस इज द सिंबल ऑफ a common emitter based transistor।
और ये NPN ट्रांजिस्टर। Now, what's the meaning of common emitter? Meaning of common emitter, that the meaning of common emitter means that the emitter terminal is basically common, or you can say grounded. Grounded for all the calculations of input voltage or output voltage or current. All the parameters will be referenced with respect to the emitter terminal. What is emitter terminal here? This is the emitter terminal. N, P, N. So this is grounded. So this emitter is grounded. All the voltages, input voltage, you can say VBE, that is base to emitter voltage. VCE, collector to emitter voltage. ICE, collector to emitter current, like this. So then IEE, say emitter current. So base current is negligible, so we are not taking base current. So all the currents which we take, they are with respect to the emitter terminal. So this is the meaning of common emitter terminal. Now, what are the advantages? Advantages are, this is the most commonly used configuration in which there is current and voltage gain.
of large value. This is to be seen of large value. As we move to the next stages, next configurations, we see that in those stages, the voltage gain is not large, or in fact very less. Therefore, this is the common emitter configuration is the most preferred configuration for the amplification purpose. This is the most preferred configuration. Now this was about the common emitter. Now second is B part is the common collector configuration. Now in common collector configuration, all the voltages, currents are taken with respect to the collector terminal. It looks similar to the common emitter configuration, but the voltage point which is but the voltage point which is used to get the output voltage is the emitter. Now we'll look at the configuration. Now here we look at this point that collector is for the positive VCC. This is input. This is your RE, and this is the output voltage. So we are taking the voltage at the emitter terminal. The output is taken at the emitter terminal. Secondly, emitter resistance is used. Now, if you look at this configuration, we look at this, we see that if we use a Kirchhoff's law here, Kirchhoff's voltage law here, we find that V input is equal to 0.7, or you can say VBE plus V naught. Now we see that V naught is equal to V in minus VBE. Means V naught is even lesser than V in. Let us say it has a negative to add it to it. It means that
that output voltage is lesser than and this is very important to understand here that the output voltage if is less than input voltage. I ask you one question, will there be any amplification? Will there be any amplification? Yes. No, sir. No, sir. There won't be any amplification because V0 over V in is less than 1. So AV is less than 1. So if voltage gain is less than 1, so we don't get the voltage gain here. But we call it as an amplifier. But we call it common collector amplifier. So this we should not call it amplifier. This is only a common collector configuration. So this is not an amplifier. So your question should be क्या होना चाहिए क्वेश्चन अब? Yes. How does it amplify? नहीं एम्पलीफाई तो कर नहीं रहा बट योर ऑटोमेटिक क्वेश्चन शुड बी अब क्या आना चाहिए दिमाग में सर इसका यूसेज क्या है? यस अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर अब एक ट्रांजिस्टर का बेसिक जो एम होता है वो एम्पलीफाई करना है या डिजिटल एप्लीकेशन में जाना है तो ये दोनों ही नहीं करता सो इट डजंट परफॉर्म इधर दोनों नहीं करता बट डिजिटल वो कर सकता है बट अभी हम वो नहीं कर रहे डिस्कसिंग अभी हम एम्पलीफिकेशन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो वो नहीं कर रहा तो अब फिर तो व्हाई इट शुड बी यूज्ड note down it is basically a configuration which is used along with the common emitter configurations. अब कैसे यूज होती है नाउ there must be some good things about common collector. Note down it has a good thing like it has a very high Z input. Z input is input impedance, and it has a very low output impedance. It has a very high input impedance and very low output impedance. This is the property. ये property है. This is the property of such configuration. अब इसको यूज क्या होगा? What is usage of such large impedance difference?
अब जो कॉमन एमिटर होता है उसकी Z इनपुट लो होती है और Z आउटपुट हाई होती है, सो इट गिव्स एम्पलीफिकेशन। ये पढ़ा हमने। अब एक सिंगल जो सीई होता है एम्पलीफायर, वो क्या करता है, वो इट गिव्स अ गेन ऑफ 50 100 देता है। बट अगर हमने गेन को इंक्रीज करना हो, want to increase the gain, so what we do is we connect two CE configurations. तो उससे एक नई कॉन्फ़िगरेशन बनती है, CE configuration. Now this will study in secondary configurations. उसको अगर हम बनाए तो ऐसे बनती है। Now this is the connection of two C configurations. Now what happens is the Z out is high and Z in is low. उससे नुकसान क्या होता है? If we directly connect two C configurations, disadvantage क्या होगा? Anyone? Yes, ये हमने +1 +2 में पढ़ा होगा। तो अगर हम Z इनपुट को और Z आउटपुट जो है उसमें मिसमैच हो जाएगा। If there is a mismatch, ये और ये इन दोनों मिसमैच होगा, तो उससे क्या होगा? Yes, anyone who remembers? Am I audible? Yes, sir. So do you remember this theorem? आपने +1 +2 में की होगी फिजिक्स में, that is called as मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। याद आया? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टेंस है RS और एक रेजिस्टेंस है RL, एक करंट फ्लो करता है I। अब ये जो करंट जो है, जो इस बैटरी से जनरेट होता है, इसे जनरेट होता है, वो पूरा पूरा करंट जो पावर है इस बैटरी की पूरी पूरी उसमें ट्रांसफर। देयर विल नॉट बी एनी, देयर वोंट बी एनी लॉस ऑफ पावर फ्रॉम द
source to the load, there won't be any loss of power from the source to load when Rs is equal to RL. This is called as maximum power transfer theorem. मतलब मैक्सिमम पावर जो है वो तब ट्रांसफर हो सकती है अगर सोर्स और लोड दोनों का सेम इम्पीडेंस हो जाए और दोनों में कोई डिफरेंस ना हो, यानी कि Z in Z out of the first and Z in of second, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तब ही उसके बाद देन वी कैन ट्रांसफर मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स टू लोड. तो कैसे पॉसिबल है? Z out or equal Z in dot out first stage is equal to Z in second stage. How it is possible? Now what we do is we connect a buffer circuit in between two common emitter configurations, which are cascaded. This one. Now these two are cascaded. अब यहाँ पर जो सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ पर हम एक बफर स्टेज ऐड करेंगे और बफर स्टेज ऐसी होनी चाहिए जो अब वो क्या करे, व्हाट आर द क्वालिटीज और रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए बफर स्टेज. क्या होना चाहिए? इट शुड मैच द impedance of the two C configurations so as to satisfy the maximum power transfer theorem. एक तो this is the first. Second, it should not provide its own voltage gain. तीसरा, it should be an active source rather than a passive source. अब ये तीन जो क्वालिटीज हैं ये कैसे होंगी? यस,
Yes. How to satisfy these three qualities? Yes. Vibhor, सर उसका कनेक्शन पुअर था तो उसने लीव कर दी। ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं बेटा हमारी की। पहले तो ये है कि इम्पिडेंस मैच करें, यानी कि ऐसा सर्किट हमें लगाना पड़ेगा। अभी देखिए, ये एक बॉक्स बना दिया कॉमन एमिटर स्टेज 1 और एक बॉक्स बना दिया कॉमन एमिटर स्टेज 2। अब इसकी जो जेड आउट है वो हाई है, इसकी जो जेड इन है वो लो है। इट मीन्स हमें एक ऐसी स्टेज चाहिए यहाँ पर जो जिसकी जेड आउट जेड इन जो है वो हाई हो और जेड आउट जो है वो लो हो। ये बात समझ में आई आपको? यानी कि ये दोनों इसके साथ मैच हो जाए और ये इसके साथ मैच हो जाए। दूसरा जो है वो इसका जो वोल्टेज गेन है इस स्टेज का नियरली 1 होना चाहिए और एक्टिव सोर्स होना चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। रेजिस्टेंस क्या करेगी? अगर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्या होगा? कैन वी यूज रेजिस्टेंस है? सिंपल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो अपना इट इट कंज्यूम्स पावर, पावर कंजम्पशन है उसका अपना, पैसिव सोर्स है वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? So what we do is we connect a common collector stage here. अब कॉमन कलेक्टर स्टेज देखिए अब आ सकती है यहाँ पर। देखिए अब इसकी क्वालिटीज पढ़िए। Is basically configuration which is used along with C configuration. These must be the same good things about CC. It has very high Z input and very low Z output. So it can be used. So, and also its voltage gain is 1, nearly 1. So it can be used here. So to cascade two common emitter configurations for maximum power transfer, we have to add a common collector stage in between the two common emitter stages. So this is the use of common collector. Now another configuration using common collector is the common collector configurations. So common collector configurations. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे।
आई थिंक वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में है वो। तो इसका जो यूसेज है, दिस इज पॉपुलरली known as Darlington pair. So this is the, now it has the advantage that if there is a very large difference in the Z input and Z output, which a single CC configuration can't match. So such configuration, CC configuration combination is used as an impedance matcher of two large differential impedances stages. उसकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में, डिटेल्स इन नेक्स्ट सेमेस्टर। तो अभी मेरा टाइम है कि खत्म हो गया? Yes, sir. ओके बेटा, सो वी मीट टुमारो। Thank you. कल कितने क्लास बेटा? सर 2 बजे क्लास है कल। ठीक है, सो मीट एट 2 o'clock टुमारो। ओके सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। गुड डे सर। ओके बेटा।